खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का ND टुडे न्यूज़ में खैर मक़दम है। आज बतारीख 23 दिसंबर बरोज़ हफ्ते को साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत साल 2023 के राउंड अप क्राइम रिपोर्ट पेश की गई, जहां साल 2023 में 3143 सड़क हादसा हुए, 27 करोड़ रुपए मालियात की मंशियात को जब्त कर लिया गया। जराइम की तादाद 29,156 रिकॉर्ड की गई है। साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश मोहांती ने इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात बताई और कहा कि साइबराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत साल 2023 में जुमला 3143 सड़क हादसा के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जो कि साल 2022 के आखिर में 3224 वाक़यात के मुकाबले में कम है। साइबराबाद पुलिस की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि कमिश्नर अविनाश मोहांती ने पेश की है, साल 2023 में जुमला रिपोर्ट करदा जराइम के मामलात 29,156 हैं, जो कि साल 2022 में रिकॉर्ड किए गए जराइम यानी 27,322 के मुकाबले में ज़्यादा है, जो कि साल 2022 में रिकॉर्ड किए गए जराइम यानी 27,322 के मुकाबले में हद तक ज़्यादा बताए जा रहे हैं। ख़वातीन के खिलाफ जराइम में कमी वाक़ई होकर 2,356 बताई जा रही है, जबकि ये साल 2022 में तादाद 2,459 थी और जुमला काबिल शिनाख्त केसेस 22,859 रिकॉर्ड किए गए हैं, जो साल 2022 में 21,398 के मुकाबले में ज़्यादा बताए जा रहे हैं। इनमें से धोखाधड़ी के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। The coming year hopefully we will continue to work, make course corrections ekkada maaki avasaram akkada course corrections cheyadam, whatever modifications and all required in our working as cheyadam. So we will try to do our best to do whatever it takes to keep the society in our area, the people in our area safe. So thank you. Na side nunchi I have this much only to tell you. I'll be very happy, our team is here, they'll be very happy to take any questions. Most important thing manaki cheyadaniki, it's to see that anybody who comes to the police station has a proper disposal of the complaint. So the complaint, the proper disposal means the disposal as per law, whatever the law permits us, what rules are there in place. So we should ensure that we are able to give them a good disposal as mandated by the law. So that is a very important priority for us. So that's something we will work very hard towards. And it may sound very simple to do that, it's just a one line, but to put the things into place, to see that everybody, right from the sector SIs to the SHOs, ACPs, DCPs, CP, everybody works towards that goal. We will try to make our best efforts for that. So that is one, adi chala important okati component ma kosam. Second, I think earlier also, and you're also all aware that Cyberabad lo economic offense, the so-called what we call commonly as white collar crime, it's pretty dominant because of various reasons. A lot of industries are there, a lot of companies are there, a lot of enterprises are there, and of course a lot of land issues also are there. So because of that we have a chala big component of white collar crime, and a proper disposal of white collar crime is very important because people lose a lot of money, lot of their hard earned money and their properties in that. So వాళ్ళకి ఒక proper delivery of justice మనం ensure చేయడానికి అది చాలా ట్రై చేస్తాం. And already meeku this problem is not a new one. Cyber crime adi continuously for the last few years it is on the rise, and it is a important matter of concern. So that subject will continue to remain important for us.
in the coming year also. सर साइबर